हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्ण 99 और आप सबका स्वागत है वापस से मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम वापस खेलने वाले हैं एक और ब्रांड न्यू गेम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं याकुजा किवामी 3 एंड द डार्क टाइज। ये होने वाला पार्ट 1 उसका। आई होप आपको सीरीज में मजा आएगा, तो लाइक करना। एंड ये थोड़ी लंबी सीरीज होने वाली है क्योंकि दो अलग अलग सेक्शन हमें कंप्लीट भी करने हैं, प्लस याकुजा गेम थोड़ी लंबी भी होती है। तो लेट्स सी हाउ इट्स एक्चुअली गोना बी। ये इंडियन स्टोर पे 5300 की है एंड ये मलेशियन स्टोर पे 4700 की पड़ी मेरे को कोड लेने के बाद से। तो यू कैन सी द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्राइसिंग, तो इसलिए मैंने मलेशियन से लिया। तो लेट्स सी, इसमें इंग्लिश का ऑप्शन आना चाहिए एंड में हमें चेंज करने के लिए। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। वो माई हीरो जैसा काम नहीं होना चाहिए क्योंकि यार PS स्टोर पे लिखा तो है, हाँ देखो इंग्लिश, ये सारे ऑप्शन है, लेकिन तो ये चीज उन्हें देनी चाहिए थी भाई। माहिरियों में दी नहीं इन लोगों ने, इसलिए मैं प्लेट करना चाहता हूँ इस गेम की, बट मैं हर चीज को ट्रांसलेट करके देखता रहूंगा तो फिर मेरे से प्लेट होती नहीं है भाई। बहुत टाइम लग जाएगा उस चक्कर में, इसलिए मैंने उस गेम की प्लेट करी ही नहीं है। या तो मुझे कोई AR ग्लास मिल जाए जिससे हाँ जो भी मैं देखूं वो ट्रांसलेट होता रहे। Until that happens, I guess it's actually gonna be not possible for me. तो अभी हम किवामी 3 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग वो करेंगे। ये PS4 गेम का रीमास्टर्ड है, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं डिस्प्ले सेटिंग वगैरह। ऑडियो में कुछ वो है कॉपीराइट वाला नहीं। सबटाइटल ऑन होनी चाहिए, हाँ। ओके, इसमें ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल लाइक परफॉर्मेंस मोड या कुछ। तो ये PS5 Pro एनहेंस्ड है बाय द वे। तो लेट्स सी, न्यू गेम पे जाते हैं, स्टैंडर्ड जाएंगे, ब्राइटनेस ही है बाय डिफॉल्ट जो भी है। वी गोना ट्राई टू कंप्लीट इट क्विकली, बट बहुत गेम चल रही है साथ में गाइस, तो कांट रियली से बहुत गेम चल रही है। ये मेरी पहली यकूजा प्रॉपर गेम है जो मैंने खरीदी है। Uncle Kaz! Got us some dinner. Let's go. I'm sure everyone's starving by now. Okay. Dinner is served. Come on, everyone. Let's eat. Okay. Okay. It looks so good. Smells so good. It's Ricky-chan! Yay! What happened to eating? Come on, let's play. Ricky-chan. Come on. Please, please. Aniki, What's wrong? Something going on? it's the boss. He's been shot. Meanwhile in central Tokyo. Yes, of course. Just a moment. Chairman, it's for you. Who is it? They said you'd understand if I mentioned the deal. This is Dojima. Yes, we've discussed this before. I told you I'm not interested. That's right. Let me reiterate. The Tojo clan wants no part in this. I've already given you an answer.
Add as many zeros as you want. I'm not going to budge. Goodbye. Chairman. May I presume that the phone call just now was about the Okinawa deal? Are you certain we can refuse it? Meaning? Respectfully, sir. At the moment, Hakuho payouts are the only thing keeping the Tojo clan afloat. And this Okinawa business, if we accept, it would mean an immediate windfall. Enough to last us through the next decade. A cursory estimate puts our returns at 100 billion yen, and that's the low end. Not only that, if we did him a good turn now, he might prove a vital government ally in the— Enough. I don't need reminding. But nothing changes. No one's taking that land. Because of the fourth chairman, sir? After all he's done for the Tojo clan, it wouldn't be right stealing the one place he belongs. Driver. Yes, sir. Take us back to HQ. Sir, what about the banquet later this evening? Cancel it. First things first, I don't want anybody trying to push this deal through behind my back. I need everyone on the same page. अभी पता चलेगा जो हमारा वो जो कैरेक्टर है उसका इससे क्या लिंक है, या तो यही बॉस है या तो देखते हैं. Welcome back, sir! Chairman, What is it? you have a visitor? They arrived a little while ago. Who? Well, What? it's true, sir. I didn't believe it myself, but there's no mistaking him. And where is he? Already in your office, waiting for you. Got it. क्या हमारी बात हो रही है? Kazuma-san. But you were dead. Sorry for the surprise. What's this? Something the chairman very much needs right now. A deed? To the land in Okinawa? But that property belongs to the fourth chairman. I'm aware. You wouldn't allow yourself to take the land from Kazuma Kiryu. Which is why we stepped in on your behalf and secured the deed ourselves. But why do this? We're not in a position to let the Tojo clan walk from this deal. The land acquisition must go through. You don't understand. I've already made my decision. I don't want anything to do with this. You may want to reconsider, Chairman. With 30,000 members to support, can you really afford to refuse? Maybe not. But tell me, Kazuma-san, what if I do? You'd be making a very big mistake.
ओ वही थे जिनको गोली लगी. Sir, Where's Nagahara? he's in the operating room. And is he okay? How's it looking? Damn it! Saki-chan, I'm so sorry. Saki. Hey, are you all right? Do we have any idea who did it? Nope. He and the little lady were alone when it went down. Guy came in, shot him right in the stomach. A lot of hits. Another family out for revenge? No. I think it's got to do with the land deal. The deed to the property, it's gone missing from the office. What? It's got to be those Tamashiro assholes. They've been gunning for us non-stop, ever since last year. I don't think so. The guy doesn't look like one of theirs. What is it, Saki? I've never seen him before. I don't believe it. This man shot him? Wait, Uncle Kaz, that's... Aniki, this guy. You know him, don't you? Yeah. He's the man who raised me. Kazuma-san. Who died in my arms. Chapter 1 New Beginnings. भाई ये गेम में जो है ऐसे कट सीन होते हैं ना, ऐसे हर गेम में होने चाहिए भाई. ऐसे डायलॉग है, प्रॉपर है, सब कुछ है भाई. और गेम देते ही नहीं है. आई लाइक दिस फैक्ट अबाउट दिस. एंड मॉडल क्वालिटी देखो. So, you're off then? We are. Right. Well, I'm glad I caught you before you're gone. ये ऑटो पे रख देते हैं. Pay respects. अब बस यहाँ पे ये थोड़ा मिस करते हैं, बट वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पोकेमॉन में तो पूरा ही मिस किया है. उस गेम का बजट कहाँ था और इस गेम का बजट कहाँ है, तब भी दे हैव लाइक सो गुड लुकिंग मॉडल्स विद द प्रॉपर डायलॉग कट सीन एंड ऑल. बट ये थोड़े थोड़े सीन है जिसमें हाँ थोड़ा लेट डाउन है, क्योंकि लाइक व्हेन यू प्ले लाइक अ स्टोरी गेम यू एक्सपेक्ट कि स्टोरी चलती जाए तो फिर डायलॉग रहे उसमें, ऐसे शांति बिल्कुल ना हो जाए. ऐसे मैं सब जब कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ तब ऐसे बिल्कुल शांति होगी तो आपको कैसा लगेगा. बस ये लिखने के बाद आएगी, अच्छा नहीं लगता ना, ये बोर हो जाता है बंदा. कौन पढ़ता है इतना इतना, मेरे को तो लगता नहीं कोई पढ़ता होगा. ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो टाइप के गेम में भी ऐसी यही दिक्कत है, तो इसलिए ज़्यादा लोग मतलब लाइक खेलते हैं फन के लिए, लेकिन कोई स्टोरी के लिए नहीं खेलता वो गेम. ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो, जेंशिन इम्पैक्ट या ऐसे टाइप की जो गेम होती है, इवन तो मैंने खेली है, बट इट्स गोना डिपेंड. In December of 2005, I lost someone very precious to me. But now that I look back on that one day, 11 years ago, perhaps our fates had been sealed from the very start. Back when I was still a part of the Tojo clan's Dojima family, there were only 3 people in the world I would call my family. One was my best friend from the orphanage where we grew up, Akira Nishikiyama. Another was the man who took me in and raised me like his own son, Shintaro Kazuma. And the last
was the childhood friend I'd always loved, Yumi Sawamura. After having lost my parents at a young age, those three were the closest thing to a family I ever had. Until... One day, right before my eyes, was the lifeless body of the Dojima family patriarch. He had tried to force himself on Yumi, and paid the price with his life. おい、しっかりしろ。錦、弓を連れて逃げろ。でも、お前は。行け、錦。弓を頼む。行け! I couldn't bear to lose either of them. So I did what I had to do. उसने ब्लेम अपने पे ले लिया. I got 10 years. While I did my time, I got word of my expulsion, and I found out that Yumi had disappeared. I was branded for patricide. When the Tojo clan cut me off, I felt like a kite without a string. Even so, there was someone on the outside who still remembered me. Oyasa. The man I considered my father. When I made parole, I set out to find him, to reunite with him, and to learn about everything that happened during the 10 years I spent in prison. I finally returned to Kamurocho. A lot had changed about the city. 直系組長の皆さんがいるこの場で3代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか? My former friend had become an entirely different man. And every thug in town was on the trail of the missing 10 billion yen. A war of succession took root in the Tojo clan. And I found myself caught up right in the middle of it. I placed my trust in Kazuma-san and went looking for Yumi. Somehow she was connected to everything. But I didn't find her. I found a little girl all alone. Her name was Haruka. At the time, she was only 9 years old. Yet this brave little girl had come to the city all by herself, determined to find her mother. We'd met by pure chance, but as it just so happened, there was one thing we had in common. お前、どうするんだこれから? 私にはお母さんとユミお姉ちゃんだけだから。Yumi? This girl, in search of her mother, knew Yumi, who I sought out. Rather than coincidence, perhaps it was fate that brought Haruka and I together in our search. However, わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。 before we realized what was happening, the clan started chasing after Haruka, believing she was the key to the 10 billion yen. Every day saw a new threat. I followed Yumi and the 10 billion's trail while protecting Haruka the best I could. Along the way, in all the chaos, I ended up crossing paths with a police detective.
Makoto Date, formerly a Division 1 cop. He had interrogated me after I took the fall for my brother, and his life fell to pieces afterward. To put his career back on track, he asked me to cooperate with his investigation. Kiryu, 俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手風。A former Yakuza partnered with a cop on the same case. It made for an odd sight, to say the least. But as time passed, we grew closer and became fast friends. But then... Kiryu Kazuma! 誘拐の現行犯として逮捕する。Pseudo, the chief of Division 1, closed in on us. だってさ。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたら。逃げるぞ、桐生。And although Date-san belonged to the police force, he ultimately chose Haruka and me over his own career. The closer we got to the truth, the more people stood in our way, hindering our investigation. A direct Tojo clan patriarch after the 10 billion, Futoshi Shimano. やっと会えたな、Kiryu. As well as the man who was acting captain of the Shimano family, Goro Majima. よう、Kiryuちゃん、探したで。Every fight against these hardened Yakuza veterans was even more fierce than the last. Even Sohei Dojima's widow, Yayoi, confronted me over the loss of her husband after his murder. And the words she spoke to me that day weighed heavy on my heart. But through it all, some were steadfast in their support. Kazuki, the owner of Stardust, the host club. Yuya, a host who works there. Terada from the Omi Alliance. The people Kazuma-san led me to gave me the courage to press on. But there was one man in particular who would end up bringing Haruka and me closer to the truth. Kiryu Kazuma. 出所早々派手にやってるみてえだな。They called him the Florist of Sai. A legendary information dealer who worked in Kamurocho's underground. 出るぞ、Kiryu。セレナの映像だ。His intelligence revealed that there was a mastermind controlling everything from the shadows. 花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。The Tojo clan's missing 10 billion turned out to be the work of a single politician. His name was Kyohei Jingu. He had embezzled the missing 10 billion yen through the Tojo clan's reserves. And he would go on to use it as a source of income for years on end. To prevent Kyohei Jingu from gaining too much influence in the Tojo clan, the 10 billion yen was stolen yet again. And the people behind it? Kazuma, 金を盗んだのはユミと俺とセラなんだ。We had finally uncovered the truth behind the money. However... Haruka! Oya-san! Kazuma-san risked his own life to protect Haruka from Shimano. As he lay dying, he revealed the final piece of the puzzle. 許してくれ、カズマ。お前の親殺したのは俺なんだ。いいんだ。いいんだ、おやさん。俺にとっちゃ、おやさんが本当の
本当の親父でした。 He confessed his long-held secret regarding my past, and then took his last breath. After finally learning the truth, Haruka and I picked up the money's trail and made our way out to the Millennium Tower. There, we found Yumi waiting for us. It turned out, the mother Haruka had been searching for was Yumi all along. Though it was a joyful reunion, the happiness only lasted a moment before it all fell apart. なんだ? Kyohei Jingu had returned, determined to take back his 10 billion yen. He planned to cut ties with the Tojo clan, join hands with the Omi alliance from Kansai, and ultimately unite Japan's political and criminal worlds under his control. He sprung a trap on one of Kazuma-san's allies, Terada, the Omi chief of HQ, then bared his fangs at us. However, 何? Yumi? もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。 Because of Yumi's courage risking her own life, and the ideals Kazuma-san passed down to me. 俺は東上界4代目桐生一馬だ。 We were able to take down Jingu once and for all. But right when we thought everything was finally over, who should walk in but him? 終わったか。これでようやく落ち着けるな、錦。 Over the course of a decade, the two of us had both changed. Fighting was the only answer we had left. So, we fought. In the end, I watched my best friend give up his own life to save me and Haruka. Kazuma-san, Yumi, and Nishikiyama. I'd lost my entire family, as well as my hope for the future. ふざけるな。お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。 The only way I managed to escape that despair was thanks to Date-san and Haruka. As for the succession of the Tojo clan, I entrusted it to Terada to uphold Kazuma-san's ideals and said farewell to the Tojo clan. With my past behind me, I started a new life with Haruka. एंड उसके बाद आई थिंक सब कहानी यहाँ से चालू होती है जो अभी हमें देखने को मिला. ये 1 और 2 किवामी 1 और 2 का था. अब 2 इतनी लंबी लंबी गेम हमने मिस करी है तो उसका इतना बड़ा प्रीव्यू तो देना और रिकैप जानना तो बनता था. टेरेडा हर बार में ऑटो सेट नहीं हो सकता क्या? हर बार मैं ही करूं?
tried to stop the missing 10 billion yen. 10 billion. अभी तो जो इस आई थिंक सो ये थोड़ा लाइक 2000 अर्ली 2000 और समथिंग का गेम है ये. नॉट द रिलीज डेट आई मीन, बट जहाँ पे ये सिचुएटेड है, जहाँ पे ये गेम बना है, जिसे एरा में बना है ना, जो इनका है ना. तो मेरे को लगता है 10 बिलियन उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बट आई थिंक सो अभी 10 बिलियन उतने ज़्यादा नहीं होंगे मेरे हिसाब से. अभी वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे. याकुजा 2 का भी पूरा देखना पड़ेगा क्या? देख, अब एक का देखा तो दूसरा का. 2005. After the incident with the 10 billion yen, वन का ही देखा था मतलब इतना लंबा. I started a new chapter of my life. Having left the Tojo clan, I spent my days with Haruka in peace and quiet. We had our ups and downs, but we did our best to support each other. I couldn't take losing any more loved ones. Unfortunately, I couldn't give her the peaceful life we both wanted, because when we visited the graves of our loved ones, the next chapter in our struggle began. 実は近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。杯? After I stepped down, I appointed Terada as the Tojo clan's 5th chairman. To avoid a war with the largest Yakuza group in Western Japan, the Omi Alliance. Terada was considering a truce and sought out my advice, though he never got the chance to broker peace. Terada was shot. As he struggled to remain conscious, with his last breath, he asked me to carry out the truce with the Omi Alliance in his place. The Tojo clan had grown weak, but Terada had been a beacon of hope. His loss could prove fatal for the organization. I was left with no choice but to return to Kamurocho. And to protect the Tojo clan, there was someone I had to meet with. He was a young man, and an active member of my former organization, the Dojima family, as well as the only son of its patriarch, Sohei Dojima. His name was Daigo Dojima. Tojo kai ni modotte kure. If negotiations with the Omi went sideways, I knew for a fact that I'd be a dead man. So I thought, if anything were to happen to me, the only one I'd trust to run the Tojo clan would be none other than Daigo. 1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。But 登場会を頼む。ダメだ。俺も行く。何？俺はな、関西に借りがあるんだよ。大悟。何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても、俺は行くぜ。And with that, Daigo and I left for Osaka to negotiate a truce between the Tojo clan and the Omi. Sotenbori, Osaka. We were set to meet with the Omi Alliance chairman, Jin Goda. Then, in Osaka's red light district,
by a twist of fate, I encountered him. おい、女子の数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや。ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤師さんなんやって。A man named Ryuji Goda, second chairman of the Goryu clan, a branch of the Omi Alliance, also known as the Dragon of Kansai. 極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうどカムロ町に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんですわ。花火。Just as Ryuji said, that night, the Kazuma family office in Kamurocho had been bombed. これが花火。By then, it was clear. Ryuji Goda wanted war. But his father was different. Jin Goda approved of the truce between Tojo and Omi. But in doing so, he painted a target on his back. 龍二。近江と東条が五分の杯やと。8に91の間違いとちゃうんか。お前何しに来た？お前は執行部の人間やない。やれ！何をする？お前の狙いはやはり戦争なのか。そうや。西と東の大戦争。それこそがわしの狙いや。それともう一つ。俺か。Ryuji Goda was after two things. First, to control all of Japan through the Goryu clan. And second, to fight and ultimately defeat me. The Dragon of Dojima. He was relentless on his warpath against the Tojo clan, and went as far as to mutiny and kidnap his own father to stop the truce. Daigo and I worked together to rescue Chairman Goda, and to take down Ryuji. On the way there, I encountered an unexpected roadblock. 本部内の全員連行や。はい。府警4課の佐山薫です。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。And that was how I met Kaoru Sayama, the Yakuza huntress. The Omi Alliance's internal conflict in Osaka, the bombing in Kamurocho. Though two seemingly separate and distinct events, one detective was determined to uncover the missing link. あれからもう20年以上経つのか。They called him Killer Kawara for leaning on his gun during investigations. A dangerous man. And age had only made his wits sharper. He and his former partner, Date-san, were tasked with investigating an underground organization. And their target was none other than the owner of the Stardust Host Club, Kazuki. At the time, I was still in Osaka. My hands forced, I cooperated with Sayama in her investigation.
She took advantage of her authority as a police officer and kept me in custody while having me contact members of the Omi Alliance. She wanted information about the power struggle within the organization. But I soon found out. Sayama had an ulterior motive for approaching me. 何べんも言うてるやんか。あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ。私の本当の親は誰なの？はあ、もうこの話はええわ。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや？あの男が登場界の人間だからよ。登場界？彼の身辺保護をすれば登場界に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。Her true intentions were to get answers to the questions she had regarding her past. Who were her birth parents? And why did she have to lose them? Why were they killed? She suspected that the Tojo clan were somehow involved. And in order to seek out the truth, she used me. お前の気持ち、わからないでもない。え？俺にも隠された過去があったんだ。隠された過去？ああ。だが俺はそれを知ってしまったことで苦しかった。知らない方が良かったとさえ思った。もしかしたら人間には知らなくてもいい過去があるんじゃないのか。それは自分の過去を知っている人間のセリフよ。そうかもしれないな。I knew how painful it is to lose your parents, and how hard it can be growing up an orphan. Maybe that was why I couldn't leave her well alone. I was drawn to her. 正直怖いわ。過去を知るのって。でもいいの。それが私が選んだ道だから。そうか。なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて登場界を探れ。もしあなたが関係してたら。そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。そうね。そうするわ。So, there we were, a detective and a Yakuza. We came to an understanding and teamed up for the sake of our goals. We pressed forward, despite knowing that the road ahead would only lead to tragedy. My search for Jin Goda brought me from east to west. And in the process, Sayama's past began to unravel itself. Her investigation brought her closer to the truth, and brought to light her connection to an incident that occurred 20 years ago. And one that, as I found out, Kazuma-san and I were involved in. Meanwhile, in Kamurocho, an organization sought revenge for what transpired 20 years ago and set their plans in motion. The Jingwan Mafia, a foreign crime syndicate, forced out of Kamurocho by the Dojima family. Their remnants had become desperate and began to move, thirsty for blood. But for 20 long years, Kawara-san had been keeping an eye on them
And when he became aware of their plans, he passed on the details to me and Sayama. We headed to the Millennium Tower to confront the Jingwon Mafia. There, we discovered the ringleader, Kurahashi, an active police chief. And in pursuit of revenge, both Kurahashi and Kawara-san died by one another's hands. First 初めてだな。父親らしいことができたのは。懐かしいな。お前の手を握るのは。お父さん。ありがとう。At last, Sayama learned the truth behind her past. As he lay dying, Kawara-san confessed that he was her biological father, before closing his eyes, finally at peace. Meanwhile, the Dragon of Kansai made his move, and threw down the gauntlet, declaring the site of what will be our final battle. So I put aside the tension between the Tojo clan and the Omi alliance to do what needed to be done. I headed to where Ryuji was waiting for me, so that we could finally settle things man to man. But after our showdown, things took an unexpected turn. When he, of all people, walked in. Terada, a man I thought to have been dead. In that incident 20 years ago, Kazuma-san had shown mercy and spared the lives of some members of the Jingwon Mafia. Terada was one of them. Consumed by his need for revenge, Terada would go to any lengths to see it realized, including faking his own death, all to set his plan in motion. あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。桐生さん、死んでもらいます。The fight that ensued was tragic. I felt as though Terada had been prepared to die. As though he knew his fate the moment he appeared before me. He met his end after being shot, an act of betrayal, by Takashima, the real mastermind. And with his dying breath, he said, 桐生さん、最後に俺を Not long after that, a bomb began to tick down. That was when Takashima panicked, and Ryuji seized the opportunity to end things himself. And so, the curtain fell on the war between East and West, Tokyo and Osaka, with heavy hearts. But there was still one more thing I had to do. One more thing I had to make right. 早いとこ、蹴りつけようやないか。やめてよ、ここから逃げましょう。断る。俺にはまだやることがある。December 24th, 2006. At long last, this trying
difficult journey of mine had finally come to an end. People here? What do you mean? इनने अब 1 और 2 की तो भाई अब रिस्पेक्ट देने का नहीं होना काम तो ही अच्छा हो. टॉक टू सयामा. ठीक है. Now the real story begins of this game. मैं recap. Paying your respects? Yeah, I'm all done here. I see. Suppose you'll be on your way then. Suppose so. We're leaving for Okinawa first thing tomorrow morning. You know, never in a million years would I have guessed you'd give up the life to run an orphanage. Back when I was a kid with nowhere to turn, Kazuma-san took me in, gave me a home. Started to think I ought to do the same. Try to help kids, if I could. Now that sounds like you. So how'd you land on Okinawa? There's an orphanage down there with ties to Sunflower, where I grew up. When the last manager died, they didn't have anyone lined up to look after the place. So they reached out to me. Asked if I had any ideas. Lucky them. You knew just the man for the job. Seemed like the right thing at the right time. Besides, there aren't too many regular jobs out there for someone with my resume. You could do worse than Okinawa. I hear it's lovely. It is. The orphanage is right on the beach. You should come visit when you get the chance. I'd love that. But I won't be able to for a while. Oh, why not? It so happens I'm leaving the country tomorrow. You are? Where are you going? The U.S. They're holding a training program there for a new department of the Metropolitan Police. The brass called up yours truly to be an instructor. What do you be instructing? I know you'd just try to stop me if I told you. So, let's leave it at that. Fair enough. All that matters to me is you're happy. I'm glad to see you follow your heart and chase your dreams. That sounds like you. I hoped you might take it this way. Besides, I didn't think you'd be too happy if I turned the offer down because I was too sad to say goodbye. You never know. There's still so much I want to accomplish, more milestones I want to reach. Going to America gives me a chance to challenge myself. I understand. Let's see where these roads take us, shall we? Who knows? Maybe in a few years, I'll be in a new place with new priorities, and you'll get a knock at your door. I hope I do. You know, I always thought they'd end up together. Can't say I'm surprised. Of course Sayama-kun's gonna put her career first. No time for romance. Yeah, guess so. Damn thing's tapped out. Here. Ah, thanks. Why don't you keep it? A gift from me to you. No smoking in Division 1. Div 1? Yes, I'm transferring back, effective next month. A Yakuza detail can smoke, but not homicide. Div 1 has a reputation to uphold. Well, look at you moving up in the world. I'm not so sure it's a cause for celebration. Why not? This recent feud between the Tojo and the Omi. Metro PD and prefectural police together couldn't do a damn thing to stop it. On top of that, Chief Kurahashi's involvement with the Jingwan Mafia made for quite a splashy scandal. It's safe to say the force's reputation has hit rock bottom. Then why would you go back? I'm taking a bribe. They promoted everyone who had any involvement in the feud, and that includes myself and Sayama-kun.
I suppose they think fast-tracking us to whatever plum post we want will keep our mouths shut. Oh, hell. A promotion's a promotion. One way or another, you're back in the big leagues. I suppose, yes. Don't look too happy. I'm already worried. About what? About what happens to Kamurocho. The police are planning to back off both the Tojo and the Omi for the time being. Remove themselves from Yakuza matters. As well they ought to. It's only right after what the Yakuza did to spare our blushes. Fair enough. So, what's got you biting your nails then? I can't bring myself to trust the Yakuza just yet. Without Kiryu-san heading up the Tojo clan, I fear Kamurocho will slide right back into the muck. Don't worry. Huh? Guy like him always has a plan. He's not gonna let things go to shit. And he wouldn't leave Kamurocho without taking care of business first. We should probably get going. So, off to Kamurocho, I assume? Yeah. Didn't want to leave without stopping by Stardust and saying goodbye to Kazuki and Yuya. And then... Well, there's one other person I need to talk to before I leave. About the Tojo clan. Yeah. If things keep on the way they're going, Daigo will end up 6th chairman. But the truth is, he's still young. I'm not so sure he can pull the clan together. So you need someone to share the weight. Who do you have in mind? There is someone who knows the Tojo clan inside and out, just like I do. He's our best bet. Ah, him. It's a risky idea. Do you really think Daigo has what it takes to rein him in? Nobody does. You just can't put a collar on some dogs. Goro Majima. If you could make him see a way he'd be able to use the Tojo to his advantage, you just might get his help. If we're lucky. Be honest. Do you really think you can get him on board? Don't have much choice. That's why I have to see him today. Whatever it takes, I'll find a way to get through to him. Think you'll manage that without a broken rib or two? I guess we'll find out soon enough. Stay safe. I'll try. You do the same. Goodbye. For now. Bye! तो मतलब जहाँ से डेमो चालू हुआ था वो Uncle Kaz, बाद में आएगा. probably the last time we'll be in Kamurocho together, right? No, of course not. We can still come visit anytime. What's wrong? I just want to have fun today. Me and you, Uncle Kaz. Can we? Sure can. Kamurocho won't know what hit it. Sound good? All right, Haruka. We've got the whole day. Where are we off to first? Well, we're right by Stardust. Why don't we go there? Like you said earlier, I want to see Yuya and Kazuki. Sounds good. Come on. Stardust it is. भाई क्लिक क्यों करना था? फर्स्ट पर्सन में जाता है भाई इससे L3 से. Boy. Pops.
That means you are loaded. Am I right? Haruka. Stay back. Okay. That will be fun. देखते हैं जब तू ठुकता है बुरी तरह पिटाई होती है तेरी. Nice. Press square. Nice. Okay. इवेजन भी हो गया. नाइस, ये भी हो गया. क्रिटिकल हिट्स. ठीक है, परफेक्ट क्विक स्टेप एंड ऑल. I guess I'm gonna keep it this one. हाँ, इसको ऑन रखते हैं. नाइस. ये भी गया. नाइस. चलो, हो गए, बच गए 12 तेरे. खुश. यही तो कॉम्बैट के लिए खेल रहा हूं मैं ये गेम. थोड़ा इमोशन वाले डायलॉग होते हैं तो मजा आता. मुझे क्या होगा ट्यूटोरियल फाइट में. We are all right. Let's go to the Stardust. Uncle Kaz, look over there. Isn't that Yuya? Stardust. A little early to be slacking off. Yuya? Kiryu-san. So, what's with the getup? Oh, this? It's just fixing up the club. Those Go-Ryu jerks really did a number on the place, you know? All the hosts have been pitching in, tidying things up, too. You mean they're the ones doing all the work while you smoke? What? You got it all wrong, Haruka-chan. I was just taking a little breather. Sure you were. Almost didn't expect to see you here. All healed up, I take it? Yeah, you know me, tough as nails. Already back to fighting fit. Ah! Ow! Ow! Take it easy there, tough guy. What about Kazuki? How's he doing? He's still resting up over at Doc Emoto's place. Gonna be a little while till the boss comes home. Doctor's orders. But he's doing pretty well. Glad to hear it. Was hoping to run into you both, but I guess I'll break the news to you first.
We came to see you guys today to say goodbye. Huh? Kiryu-san, what do you mean, goodbye? We're moving to Okinawa. There's an orphanage down there, and I'm gonna run it. Try my best to, anyway. And you're going too, Haruka-chan? Mm-hmm. We're sticking together. She grew up at an orphanage called Sunflower. Same place I was raised. Turns out this place in Okinawa has ties to it. Heading down there and taking care of kids started to seem like the right idea. We know what they're going through. Man, you're a stand-up guy, Kiryu-san. I'm gonna miss having you here. We can still see each other anytime, you know. This isn't the end of the world. Not like I'm running off and leaving the country. Once Stardust is all fixed up, why don't you come visit? You know, that's not a bad idea. We do take a vacation every year. I'll tell the boss we should hit up Okinawa with the boys. Sounds good. You guys are welcome anytime. Speaking of Kazuki, I think we'll go see him now. Oh yeah? I know he'll be happy to see you. Take care, Yuya. And remember, you're in charge while Kazuki's out of commission. Make sure the place is still standing when he comes back. I'll do what I can. Well, Kiryu-san, Haruka-chan, you two have a safe trip. Thanks. Bye-bye, Yuya. Don't forget to come visit. We should check on him. I'm glad Yuya's doing okay. I hope he really does come see us in Okinawa. I'm sure he will. Once Kazuki's healed up. And they'll probably bring all of their friends too. ओके मैंने सोचा कि डायलॉग पहले खत्म होने दूं फिर मैं इधर आऊं कि कट सीन ट्रिगर हो जाएगा नहीं तो और शॉप का अभी क्या करेंगे अभी आराम से लाइक हम लोग इसके पास कर सकते हैं शॉप को बाद में एक टाइम पे खरीद लेंगे जब जरूरत लगेगी अबे क्या है ये बच्चे बार बार आ जाते हैं बार बार हर 2 सेकंड में फिर टुकने आने हो क्या फिर टुकना है क्या तुम लोगों को गलत पंगा ले रहे हो तुम लोग फिर पिटोगे फिर ग्राउंड पे पड़े मिलोगे आई गेस ये सुपर मूव का भी ट्यूटोरियल होगा ना वो दे रहे होंगे इस बार आई बिलीव लेट्स सी अबाउट दैट इनकी ठुकाई थोड़ी और सुपर स्टाइल में होगी फिर सम कैश कोई नहीं तुम ठुक जाओ कोई दिक्कत नहीं हमें I don't think so. I know I can take you on. Get wrecked, Gramps. भाई इतनी उम्र भी नहीं उसकी बट ठीक है L1 to guard. Nice. Health and okay. Heat gauge. Dragon boost. Okay, R2 for the dragon boost.
ड्रैगन फिनिशर। भाई साहब टेकन का बिल्कुल मूव की याद दिला दी भाई। भाई डायरेक्ट फेक हाउस पे। You love to see this combat, man. What? I just love this part, like कि ये थोड़ा ओपन वर्ल्ड टाइप टेकन इस मूव सेट वाला गेम है, क्योंकि आई डोंट नो, मैंने बचपन में नहीं खेली, मेरे दोस्त ने मेरे को बाद में बताया। बचपन में एक टेकन गेम आई थी जो थोड़ी सी नॉट लाइक 2D टेकन गेम लेफ्ट राइट वाला के अलावा थोड़ी ओपनिश थी, लाइक दिस वन। तो वो जब मैंने खेली एमुलेटर वगैरह पे, आई वाज लाइक ये क्यों नहीं खेली। या तो टेकन थी या तो मॉडल कॉम्बैट थी, कोई एक गेम थी, मेरे को याद नहीं एक्चुअली। तो वो PS2 की गेम थी जहाँ तक है। तो इट वॉज रियली ग्रेट मैन। दोस्तों के साथ खेलने में बहुत मज़े आ रहे थे, और उसमें 2v2 कर पा रहे थे प्रॉपर। ऐसा नहीं कि एक टर्न जा रही है फिर दूसरा बंदा आ रहा है, जैसे 2v2 प्रॉपर हो रहा था। लाइक दो अलग फाइट कर रहे हैं, दो अलग फाइट कर रहे हैं, तो मज़ेदार था बिल्कुल। And I don't know why they don't make Taken games or Mortal Kombat game like that anymore. Like at least option दो ना बंदे को, अगर उनको वैसे टाइप की फाइटिंग पसंद है तो why not? अगर वैसे टाइप की फाइटिंग पसंद है तो बंदों को ऑप्शन मिलना चाहिए कि you need to go for that or this, it's your choice. And आजकल कॉन्सोल इतने पावरफुल हो गए हैं तो क्वालिटी तो अच्छी आएगी। अगर PS2 पे ठीक ठाक क्वालिटी मिल सकती थी 480p पे, तो जस्ट थिंक ऑफ इट। अभी 1440p या उस पर कुछ चलेगी तो कितना अच्छा रहेगा। अपग्रेडेबिलिटी, द सेक्शन इन द पॉज मेन्यू। ओके, इसका क्या सीन है? ये कहाँ दिखेगा कि हम लोगों के पास कितना है? अच्छा ये पैसे लेता है, ओके। होल्ड स्क्वायर देन डबल टैप, ये भी अच्छा है। Let's just acquire this first. Acquire this. And ये वाला क्या है? अच्छा मैं इसे उठा सकता हूँ, वाह। ये ले लेते पहले। हीट ब्लास्ट, अटैक फ्रॉम बिहाइंड ना, अभी तक कोई नीड नहीं है। अभी डैमेज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी होना चाहिए अभी के लिए। नाउ लेट्स जस्ट गो फॉर दिस, लेट्स एंटर। Hey, Kazuki. How you holding up? Oh, Kiryu-san. That's very kind of you to check up on me. I've been feeling much better. The doc says it'll still be a while until I can go home, but at least I'm on the mend. Good. I'm glad to hear you're coming along. You'll be out of here before you know it. Thank you, Kiryu-san. Kazuki, we actually came here to tell you goodbye. Goodbye? What do you mean? Are you two going somewhere? Yeah. Now that things have settled down with the Goryu and the Jingon. And Daigo's stepping up to lead the Tojo clan. Things may not be perfect, but I've done all I can. It's time for me to settle down too. That's why we're moving to Okinawa. Okinawa, huh? What a big change. That's pretty far away. That's the idea. I'm gonna be running an orphanage down there. Sorry, me and Haruka will. Wow. I know you'll do great, but I can't say we won't miss you both. Yuya said the same thing. We'll miss you guys too. But he said you and the whole team would come visit one day. Right, our vacation. We've been looking for a good place for some R&R. Can't get much better than Okinawa. You better not forget. Don't worry, Haruka-chan. The boys and I will see you soon. Kiryu-san, thank you for everything. The only reason I'm still here is because of you. You shouldn't be thanking me, Kazuki. Remember, I'm the one who got you involved in all this. If it wasn't for me and the Tojo clan, you wouldn't be laid up here in the first place. For what it's worth, as the 4th chairman of the Tojo clan, I offer you my sincere apologies. I'm sorry, Kazuki. Don't be like that, Kiryu-san.
If you weren't there, who knows what would have happened to Kamurocho? We're lucky it's still standing. I lived in this town a long time, since back when Kazuma-san was still around. And the two of you always looked out for me. So please, there's no need to apologize. Not sure about that, but I won't argue too much with a man in a hospital bed. Thanks for having my back, Kazuki. I mean it. Of course. Take care of yourself, Kiryu-san. You too. I really, really hope you feel better soon, Kazuki. Thanks, Haruka-chan. Be good now, okay? Okay. Bye. So I hear you're leaving town. Did you say your goodbyes to the folks in the Tojo clan yet? No, I decided not to bother them. Daigo and Yayoi-san have their hands full trying to put things back together. Besides, it's a new day. Now that Daigo's in charge, the Tojo clan doesn't need me anymore. I wouldn't be so sure about that. It's all right. I wrote Daigo a letter. Asked Kashiwagi-san to give it to him after I left. That's good enough. I don't need to drop in on him now. But there is someone I have to see before I leave, whether I like it or not. I've got an idea that might get the Tojo clan some help. Majima. So what's the plan? Gonna ask him to keep an eye on Daigo? Not quite. If we want the heads of the other families to accept Daigo, they need an example. We need someone important from the old guard to come forward and show them a little support first. A big name, like Majima. Well, couldn't you push him around a little to bring him in line? Not me. I'm not part of the Tojo clan anymore. It wouldn't be right for me to interfere. I can't be the help Daigo needs. Besides? It's funny. Wasn't so long ago the Tojo clan wanted me dead. Can't say I blame him. I brought down some of those families after all. Made my fair share of enemies in the ranks over the years. So you need someone who's been around the block like the Mad Dog. Right. None of the patriarchs have what it takes to keep Majima-san in line. Nobody messes with him if they can avoid it. And that's why I need someone like him to back Daigo. Show everyone how to follow orders. I get the gist. Well, you're probably headed out to see him sooner than later, I take it. Not just yet. I promised Haruka we'd walk around Kamurocho a bit first. Enjoy the last day in town. I'll go see Majima-san once we're done. Haruka. All right, the young lady. I'm gonna hazard a guess you won't be taking her with you to meet Majima. I'm happy to watch her here if you like. Yeah, I'd appreciate that. All right, we'll head out for now. I'll be back later to drop off Haruka. Thanks, Doc. My pleasure, Kiryu-san. Good luck. Feeling better. All right. अगला कहाँ जा रहा है आप बताइए कैरियोके अरे याकुजा का वो एक पार्ट भी तो है था कैरियोके वाला बट वो थोड़ा ट्रिकी पड़ जाता है यार होगा मेरे हिसाब से क्योंकि मेरे को इतना वो सिंग हीरो या सिंग स्टार जो करके प्लेस्टेशन का गेम आता था वो और एक उसका भी आता था यूबीसॉफ्ट का तो और गिटार हीरो टाइप वैसे टाइप का मेरे को आदत नहीं है वो लाइक उसमें जो बटन का प्रॉम्प्ट आता है वो लाइक एक बार दबाना तो ठीक है वो बार बार जैसे एक को छोड़ा एक्स सर्कल सर्कल एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे रैंडमली जल्दी जल्दी आता है ना तो मेरे को उसकी आदत नहीं लगती है So earlier I was saying, it's been ages since we sang karaoke. This is gonna be so much fun. Didn't know you loved singing so much. We can go whenever you want, you know. ओके इधर से जाना था मैं मेरे को वही सोचो कि मैं कैसे जाऊं मैं रास्ता ढूंढ रहा था बट मिला नहीं रास्ता La 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 mobile, to the la 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 mobile for all your cellular needs. वाह
ये देखो, ये कीपैड वाला फ़ोन है ना, तो ये या तो अर्ली 2000 है या तो कुछ ऐसा है, मैंने बोला था ना जैसे। तब उधर 10 बिलियन येन की बहुत, इनने वैसे बताया भी है 2005 या 2006 ना, तब 10 बिलियन येन बहुत होते होंगे। अभी आई डोंट थिंक सो उतने होते हैं, लाइक अभी उस टाइम की 10 बिलियन अभी आराम से 20 या 30 के आसपास होंगे, अगर वो सेम देखा जाए तो, क्योंकि महंगाई बढ़ गई हर जगह, चीज़ें महंगी हो गई हैं, टेक्नोलॉजी महंगी हो गई है, तो दैट्स द थिंग। इंडिया में देख लो कितना महंगा हो गया। एक ज़माने में हम 100 रुपये का 1 GB यूज़ करते थे पूरे महीने एंड आओ हम लोग 3 महीने के लेते हैं 1000 रुपये के, और 1.5-2 GB यूज़ करते हैं पर डे। वो अलग बात है कि मेरा तो उस टाइम के मुकाबले पूरा यूज़ केस ही बदल गया है, क्योंकि मैं उस टाइम यूज़ करता था तो आई यूज टू बी लाइक 15 डेज या 20 डेज में 1 GB, राइट। अभी मेरा आज में, जैसे मैं ये अपलोड करूँगा, आज में 100-150 GB तो अपलोड हो जाएगा कहाँ 1 GB का 100-150 GB कुछ सोचो भाई। एक महीने में मेरे क्या कहते हैं, आराम से कई बार तो 4-5 TB तो होते थे पहले, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें करता हूँ और फिर मैं अपलोड, और फाइल साइज़ भी बड़ी हो गई अब, क्योंकि गेम ज़्यादा आने लग गए हैं, तो कई बार तो 10-10 TB 11-11 TB यूज़ हो जाता है ऐसे ही आराम से। कुछ मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ अपलोड और ये सबके में, थोड़ा बहुत डाउनलोड लाइक मे बी लाइक 30% या कुछ होता होगा, बाकी सारा अपलोड है, तो उसी में 10-11 TB 12 TB ऐसे यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि आप एक लाइक मल्टीपल वीडियोस पर डे, और खासकर वॉक थ्रू जो कि होते हैं 2-2 2.5 घंटे 3-3 घंटे के, तो उनका फाइल साइज होता है 50-55, और अगर फुल गेम डाल रहा हूँ तो उनका अप टू 220-240 GB तक साइज जाता है। तो 9 कमेंट्री का फुल गेम और एक हिंदी कमेंट्री का फुल गेम, वही क्या कहते हैं 500 GB के आसपास हो गया। जस्ट थिंक ऑफ इट, ऐसे रैंडमली ऐसे हाई पूरे GB उड़ जाते हैं अब देखते हैं, इस मोबाइल से हमें कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, मेरे साथ तो कुछ एबिलिटी या कुछ तो मिलेगी, नहीं तो ऐसे मोबाइल बस स्टोरी का पार्ट होगा तो भी ठीक है, बट मेरे को लगता है कि ऐसे मोबाइल ऐसा अपग्रेड कर रहा है, तो जैसे कई गेमों में होता है ना मोबाइल का सिस्टम की, मोबाइल अपग्रेड करा तो आपको नए फीचर मिले या नया मूव मिले, कुछ ऐसा टाइप, तो मे बी लेट्स सी। इस गेम का जो किवामी 2 करके अभी जो याकुजा 2 का हमने ग्लिम्स देखा था ना, उसमें जो एक बार में उस गोल्डन वाले बाल वाले से हम लोग भिड़े थे ना, वो एक्चुअली डेमो में पार्ट था। वो मेरे को याद आ रहा था, अरे हाँ मैंने डेमो खेला था, तब मैं बार में था और ऐसे मैंने थोड़ी धुलाई करी थी उधर इतना मुझे याद आ रहा था। मैं बोलना चाह रहा था बट वो डायलॉग चल रहे थे तो मैं बोल नहीं पा रहा था। दैट्स द ओनली इशू कि जब डायलॉग चल रहे होते हैं ना, मैं आई जस्ट ट्राई टू अवॉइड माई सेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग जस्ट सो यू कैन एक्सपीरियंस द स्टोरी एंड आई डोंट इंटरफेयर इन द डायलॉग्स एंड ऑल, just so you might miss something because I'm saying something and all. But जब डायलॉग नहीं होते तब बात करने का मौका मिल जाता है। Yeah. देखा, ये आ गया कस्टमाइज फोन, चेंज रिंगटोन, वाह 199 3 स्ट्रैप्स भाई साहब, ये फुल कस्टमाइजेशन। स्टार लगाते हैं, रूबी है, लॉक स्क्रीन, ये थोड़ी नई लग रही है तो लेट्स जस्ट गो फॉर दैट। ये डिफॉल्ट ही सही है। Unsure what to pick. स्टार लगा दी ऊपर तो सिग्नल कैसे आएगा? आई थिंक तो जिस जमाने जो 2006 के आसपास का है ना, तो उस जमाने में 3G चल रहा था या 2G चल रहा था। आई थिंक 3G या तो इंडिया में लेट आया था या तो कुछ तो हुआ था ऐसा, क्योंकि मुझे याद है मैं 3G जब यूज़ करता था वो था अराउंड टाइम 2008-2009,
एंड तब मैं 3G वगैरह यूज करता था भाई। उसी में 10 Mbps स्पीड आ जाती थी ना 3G में, तो ही मैं पागल हो जाता था। मेरे को याद है मैंने ब्रॉडबैंड की जगह उसको इतना यूज किया है ना। ये क्या है? ये क्या पागल बनती थी? क्योंकि मेरे पास उस टाइम था 512 kbps वाला इंटरनेट, तो कहाँ 512 kbps, कहाँ 10 Mbps। भाई मैं इतना शौक हो जाता। फिर मैंने बाद में ब्रॉडबैंड लिया था 10 Mbps। वहाँ पे मेरे को पता चला कि ऐसे लोकल प्रोवाइडर दे रहा है जो स्टेबल भी है एंड 10 Mbps भी दे रहा है। तो मैंने कहा यार लेट्स जस्ट गो फॉर इट। और वो काफ़ी सस्ता भी था, इतना महंगा भी नहीं था। लेकिन उसका कुछ लिमिट थी, लाइक 10 Mbps की कोई 30-40 GB या 50 GB। अभी सोचो 3.3 TB मिलती है, तब मेरा काम नहीं चलता। Yeah man, that was the time how we upgraded from just getting like 10 Mbps to getting 1 Gbps, and not just 3.3 TB anymore, all the way to 20 terabyte. 20 TB is a lot for almost the same price of that 10 Mbps, close to that actually। यानी डबल या डबल समथिंग प्राइस है उसका डिफरेंस है। हाँ, वो तब 1000 रुपये का कुछ था, ये अभी मेरा 4700 का है। तो कह सकते हो उस जमाने के 50 Mbps का जो प्राइस था वो अभी मेरा 1 Gbps का है। लाला लैंड सर्च मोड है, लाला कॉन्टेक्ट 1 से लेवल 3 है रिवॉर्ड। क्या देखना पड़ेगा भाई ये सब क्या है। ये कुछ अपग्रेड के काम आए हमारे कॉम्बैट के, तो ठीक है, तो अच्छा है। नहीं तो फ़ोन के कस्टमाइजेशन है, तो आई डोंट लाइक दैट, आई जस्ट डोंट। ये चीज़ें मेरे को इतनी वो नहीं करती। लाइक मेरा विंडो का जो वॉलपेपर है वो अभी तक डिफ़ॉल्ट विंडोज़ का वॉलपेपर है। अब तो खुद सोच लो, बस उसमें से बस वो जैसे वो होता है ना लाइट मोड और डार्क मोड, बस डार्क मोड पे और कुछ नहीं। L2 to search mode and R2 to interact. All right. Can I get your number? Got it. लाला फ्रेंड्स, लाला लाला पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करूँ। लाला तो सर चलो मैं प्रोनाउंस कर सकता हूँ एक बारी में, बट मैं लाला ला ला 3 बार कैसे बोलूँ? जीप लब जी। ओके ओके, वो जो लव बॉक्स है देखते हैं। क्लेम वॉज इनसाइड। पता नहीं, या तो गर्मियाँ आ गई मेरे लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं आई। सब लोग बाकी स्वेटर में हैं और बाहर का मौसम भी ऐसा नहीं है गर्मी वाला, बट अपेरेंटली मेरे को ढंग से लाइक नींद ही नहीं मिल रही इस चक्कर में आजकल। जैसे मैं एक पार्ट रिकॉर्ड करता हूँ ना 2-2.5 घंटे का, लाइक मेरे सिर में अजीब सा लगने लग जाता है मुझे आजकल। तो इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए कल आपको 2 ही वीडियो देखने को मिली, एक लेट रात को आई जस्ट उस रीज़न की वजह से। मैंने कहा यार मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, बट मैं सोया तो फॉर सम वॉट रीज़न ये इशू रह गया कि लाइक तब भी मेरी नींद नहीं मिली मेरे को ढंग से, तो मेरे सिर में दर्द था। तो मैं एक पार्ट रिकॉर्ड करके वापस सो गया, वो अपलोड डाल के आप लोगों के लिए, पोस्ट करके आप लोगों के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये गेम मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। 12 बजे मैं स्टार्ट करने का वाला था, बट मैंने ये गेम स्टार्ट किया अराउंड 1.5 घंटा ना, तो आधा घंटा
3:30 3:15 बजे के आसपास चालू किया मैंने खेलना ये गेम। डाउनलोड पे मैंने लगा दिया था 12 बजे, फिर मैं सो गया इस चक्कर में। सिर में दर्द होता है तो मन नहीं करता रिकॉर्ड करने का। एंड फिर मैंने ये ली मलेशियन अकाउंट से, तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर मेरे को पहले से मलेशियन से लेना होता तो मैं तो उसको प्रीलोड भी कर सकता था, मैं इसको 9:30 बजे भी खेल सकता था रात को। बट नहीं, मैंने कहा कि मैं इंडियन से ले लूँगा, सस्ता पड़ेगा, बट यहाँ तो उल्टा और महंगा आ रहा है। क्या ही बोलूँ। यहाँ पे तो उल्टा और महंगा आ रहा है। मैंने गेम द शॉप पे सीडी की प्राइस देखी तो 5,000 थी, तो डिजिटल का क्या लॉजिक है मेरे को नहीं समझ में आया 5,300 देने का। और ऊपर से डिजिटल यूजुअली ऐसी गेम थोड़ी सस्ती रहती है। Which one? What's your number? We're connected. All right. What's your number? ला ला Lead the way. ओके, तो हार गया। इनमें मार्क नहीं होता क्या? इनमें मार्क नहीं होता क्या कि लाइक मैं ट्रैक कर पाऊँ एक ही एनिमी को? आ जाए, यहाँ पर है हमारा कैरियोके। किसी और पर फोन सिग्नल तो आ नहीं रहा। लेट्स जस्ट गो फॉर द कैरियोके। देखते हैं, बस ये कॉपीराइटेड ना हो यार, मैं दैट्स ऑल आई होप, क्योंकि मुझे एडिट नहीं करना। मुझे बार बार अपलोड करके चेक करके फिर एडिट नहीं करना है फिर उसमें बहुत टाइम जाता है, क्योंकि 4 की वीडियो भी उतनी टाइम में रेंडर होती है, 2 वो जो 720p है वो भी उतने में होती है। सिंक 4, रैपिड होल्ड, सिंक 3। ओके भाई, देखते हैं भाई। Should I sing, Uncle Kaz? We have gone our separate ways. So tonight. Casual. This song goes out to you. Back in the day, I thought I was strong. Thought I was the one who could right every wrong. Years roll on by, time does what it does. So hard to hold on to the people we love. I'm starting to cry. I've lost count of the days, and though I'd never stop thinking of you, we have gone our separate ways. So tonight, let's start again from this night. Rewrite the way it ends. You and I would laugh and sing all night like we'd always meant. So tonight, you'll find me there. The nights we shared, in places drinks would flow and the sun never rose, and life meant living the life we chose. If I could relive the moment we drifted apart, I'd right every wrong for you. Whatever life asks from me, I will do just to see you smile and waste a night with you. What a good song. गाना खत्म नहीं होता कि भाई हो जा।
आई होप इतना कॉम्बो करने के बाद हो गया हो खत्म। कैलकुलेटिंग रैंक बी या कुछ ही आएगा यार, बी या सी। Good job, Uncle Kaz. डेली टॉप 3 चार्ट You better pay attention. हो गया हमारा खत्म। कैरियोकी वाला आई थिंक हो गया हमारा। अब क्या करना है? Yeah. We used to. Glad to hear it. Somewhere. वापस आ गए ठुकने मेरे से। अब क्या चाहिए? ओके, इनका कोई बॉस आया है। इंटरेस्टिंग, तो इस बॉस की बॉसी पंक्ति खत्म करते हैं। बेटा तुम्हारी तो छोटी सी चींटी चित्ती वाली गैंग है, हमारी तो लायन वाली गैंग थी, तो उसके हम लीडर थे। अब तुम समझ लो तुम्हारे क्या होगा तुम हमसे भिड़ोगे तो। What will happen to you guys? You are digging your own grave, my friends. You are digging your own grave. देखते हैं। करनी है तो फाइटिंग चालू करो, हमारे मुक्के रेडी हैं ठोकने के लिए। ठोका ठुकाई के लिए हमारे रेडी हैं। लेट्स गो फॉर दिस। कहीं चाहता है तो कर, आजा भाई तू। नाइस। एक मिनट, अरे नहीं ये नहीं करना था। इसके मुंह पे मारूंगा, रुक जाओ। इसके मुंह पे मारूंगा। यार अब ठुक के मजा आया। Hey. Teach me a lesson. आ गया मजा, चख लिया स्वाद हमारे मुक्कों का।
Huh? Huh? Poor chairman. फट गई इनकी. Hey. From the Kazama family. Kazama से शिनचैन की याद आ जाती है. बचपन में आई थिंक सो जो भी 90s के किड थे या फिर अर्ली 2000 के थे उनने सबने शिनचैन तो देखा है. दैट्स आई कैन से. अपेरेंटली मेरे को बड़े होने के बाद पता चला कि शिनचैन जो था वो जापान में अडल्ट कार्टून था बट इंडिया में बच्चों को दिखाया गया है इसलिए उसमें काफ़ी सेंसरशिप और डायलॉग चेंज थे. तो इंटरेस्टिंग है ये चीज़. शिनचैन, डोरेमोन, कितरेसु, पता नहीं कितने सारे हम लोगों ने लेजेंडरी चीज़ें देखी हैं. अब मन ही नहीं करता टीवी देखने का. कुछ ऐसा लेजेंडरी आए तो मज़ा आए, कुछ आता ही नहीं है. लेकिन जो मेमोरीज थी ना आई लाइक टू कीप इट विथ माई सेल्फ. तो इसलिए मैं वो सीरीज़ अगर मुझे कहीं हिंदी में मिल जाती है ना तो मैं आई लाइक टू सेव इट इन माई लाइक एक हार्ड ड्राइव बना रखी है स्पेसिफिकली एक टीवी की मैंने. उसमें सेव करता हूँ मैं ये सारी चीज़ें. जो चीज़ें थोड़ी रेयर होती हैं जैसे ड्रैगन बॉल जी की रेयर है हिंदी वाली तो वो मैंने करी है. एंड मैं ये सारे गेम भी करता ही हूँ जो भी मैं खेलता हूँ गेम वो सारे मोस्टली सेव रहते हैं मेरे पास. बट उनका क्या है कि या तो फुल गेम वर्जन सेव रहता है नो कमेंट्री वाला विदाउट एनी लोगो. जैसे मेरे को कभी भी डालना है तो बस आई जस्ट नीड टू पुट अ लोगो इन दैट एंड आई कैन जस्ट पोस्ट इट डायरेक्टली. नथिंग टू वरी अबाउट दैट ह्यूज एडिटिंग एंड ऑल. एंड वो चीज़ मैंने करना पिछले साल से चालू किया है. एंड उससे पहले मैं सारी जो भी रॉ फाइल थी उन्हें कंप्रेस करके रखता था तो मैं उन्हें एडिट करना है मुझे. तो इसलिए कई सारे पुराने वाले मैं डालने की सोचता हूँ फिर याद आता है अरे यार एडिटिंग करनी है. मुझे याद नहीं है ना कहाँ पे कट करना है. तो वो मैं कभी डालूंगा तो ज़रूर लेकिन कब डालूंगा मुझे ये नहीं पता. वो मैंने रखी हुई है सेव करके. पिछले 3-4 साल की तो है मेरे पास. नहीं एक्चुअली उससे भी ज़्यादा क्योंकि वी आर 10 years मोर देन 10 years नाउ ऑन यूट्यूब. तो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं. यस सक्सेस नहीं मिली वो सब अलग बात है बट मैं अपने एथिक्स नहीं छोड़ सकता और मैं अपना जो चीज़ें मुझे खेलना पसंद है वो ही नहीं हो सकता. मैं ये मैं ऐसा देखते हैं. There's karaoke in Okinawa too. Just say the word and we'll go. Anytime, anywhere. Awesome. That's a promise then, Uncle Kaz. All right. तो that's the thing. But I like to upload that, but I don't know मैं कब एडिट कब करूँगा उस पर डिपेंड करेगा. तो स्टोर पे देखना चाहता हूँ मैं स्टोर पे मिलता क्या है एक्चुअली. Which one? किसी पे सिग्नल नहीं है. डायरेक्टली पिक कर सकते हैं या शॉपकीपर से बात करनी है. क्या यार डायरेक्टली पिक कर सकते तो मज़ा आते हैं. ओके इन चीज़ों से क्या होता है. रिस्टोर हेल्थ. ओह ओके सारे हेल्थ हीट रिकवरी भी है. ओके ये क्या है. ड्रंक भाई ड्रंक वंक नहीं होने का मूड है मेरा. ये क्या पॉइंट है. ये देखो 140 का 750 है 130 का 700 है. 10 के लिए क्यों मैं करूँगा. 5 ले लेता हूँ ये. एंड Which one? All right. ऐसे टर्न क्यों मजा मेरे को ये समझ नहीं आया. मेरे को लगा कि एक्स से भी स्प्रिंट कर सकते हैं हम. आ जाओ.
ゃねえぞすぐ倒れんじゃねえぞ नाइस अपना फेल हो गया भाई वो एरिया से बाहर निकल गया तो मैं उसके तो कुछ ही कर नहीं सकता भाई लेट्स जस्ट ड्रॉप हर हियर यू देयर कौन बोलता है वेलकम बैक बोल रहा है वो लिटरली उसको यू देयर बना दिया आई डोंट थिंक सो कि लाइक जैसे इंग्लिश में डायलॉग नहीं है तो आई डोंट थिंक सो इन लोगों ने जापानीज में भी डायलॉग दिए होंगे बट द ओनली थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस कि मैंने मलेशियन अकाउंट से लिया और मेरे को वो माई हीरो वाला प्रॉब्लम ना आया और ऊपर से क्या कहते हैं गेम प्ले अभी तक मक्खन चल रहा है नो लाइक एनी स्टडर और समथिंग लाइक दैट आई लाइक दैट क्योंकि इस गेम में इफेक्ट्स हैं बट शायद आगे जाके स्टडर होगा तब देखते हैं वो बाद में देखेंगे बट वही है कि अभी के लिए तो मैं बस वही चेक कर रहा था कि स्टडर तो नहीं है एंड अभी तक मक्खन चल रहा है और क्वालिटी भी एक नंबर है ऐसी भी कोई बात नहीं कि क्वालिटी गंदी है या कुछ हियर वी आर ये गेम है तो PS4 पे भी हमेशा मस्त लगता था मुझे तो जस्ट थिंक ऑफ इट अभी PS5 Pro की पावर ले रहा है और मैं PS4 की जब बात कर रहा हूँ तो मैं भी PS4 Pro की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ 2017 के बाद तो सारी चीज़ें मैंने उसी पे खेली हैं PS4 पे कौन खेलेगा फिर देखो जब मैंने लिया है किसी रीज़न से पावरफुल कंसोल तो फिर मैं क्यों वो खेलूँ Nishida, right? You're with the Majima family. Oh, Kiryu-san, hello. Good to see you. What brings you out here at this time of night? Oh, the boss had some business at the Kazuma family office, so I'm just waiting for him out here. Wait, I probably shouldn't have been too casual with you. Should I call you former chairman, or...? Don't worry about it, Nishida. I'm a civilian now. You can call me whatever you want. Good. I'm glad I didn't offend. I think I'll stick with Kiryu-san then. Old habits and all. Hey, whatever floats your boat. So, how long's he been in there? Think his meeting will go much longer? Oh, no. I'm sure they're done by now. The boss thinks meetings are boring as shit, so I doubt it even lasted a half hour. I bet by now you'd find him on the roof, looking down over the city. Might come as a surprise, but the boss can be pretty sentimental sometimes. I'm sure he's all torn up inside about you leaving town, Kiryu-san. He might not admit it, but... Think so, huh? Well, it's nice of you to say anyway. You did come here to see him, though, right? Yeah. We need to talk. Right. Kiryu-san, the boss has a message for you. You didn't think you'd just waltz up and get a sit-down with me, did ya? Kiryu-chan. What? Even you ain't that dumb. You want my time? You gotta earn it. Go ahead! Prove to me you got what it takes on the dumbasses you see before ya. Now get going. Chop chop! Don't keep me waiting. Kiryu-chan! That's all of it. I'm very sorry, Kiryu-san. Guess he figured I'd be stopping by at some point. He probably had a gut feeling. Wouldn't surprise me. The boss's instincts are usually spot on. It's nothing personal, Kiryu-san. You understand. The boss gave us orders, so... shall we? All right, all right. But you know... for a bunch of grunts just doing what they're told, you sure seem happy about it. Let me guess. You all volunteer? The boss encourages enthusiastic participation. Sure does. No hard feelings. Now come on. Give me your best shot! I knew you'd understand, Kiryu-san. Well then, here we go! Come in.
ओके और अ ब्रेक नाइस डेडली अटैक्स ओके अरे वापस पकड़ लिया नाइस इसको भी ठोकते हैं ओके कितनी बार पकड़ेगा भाई भाई साइड से अप ही नहीं हो रहा इन्वेंट्री नहीं आधी बार हेल्थ तो आ गई नाइस हो गया खत्म अच्छा बीच में हेल्थ लेने का ऑप्शन था ब्लू वाले बार की मैं भूल गया कि क्या था ट्रायंगल या था क्या था कुछ तो था Same old Kiryu-san. The Majima family hasn't changed much either. Think you earned your keep. Oh, one more thing. Remember when I said the boss could be sentimental sometimes? Please don't tell him I said that. If he found out, I'd be in a world of hurt. Don't worry. Your secret's safe with me. Take care of yourself, Nishida. Good luck. Thanks. You too, Kiryu-san. Ow. Thanks, Majima-san. You always make me feel welcome. बॉस फाइट थी ना इसलिए हेल्थ गई नहीं तो अगर नॉर्मल फाइट होती तो हेल्थ नहीं जा रही थी हमारी हम लोग थोड़ा अपग्रेड भी कर ही सकते हैं हेल्थ वगैरह को देखा जाए तो देखना कोई और मूव मैं उसका ढूंढता हूँ क्योंकि पैसे हैं अभी हमारे पास तो ख़त्म कर सकते हैं हम उसे अपग्रेड को काफ़ी हद तक काफ़ी सारा वहाँ सिर्फ नीचे जा सकते हैं अच्छा यहाँ से लिफ्ट लेनी है हेल्थ कितनी है हमारे पास अभी हेल्थ नहीं है फर्स्ट पर्सन में जाना बंद कर What happens if I just go out from here? Let me upgrade myself a little bit. Uppercut. Heat action. ये चाहिए तो है मुझे बढ़ाई गैस मैं अभी के लिए ये बढ़ाऊंगा एक
इसके लिए अलग पॉइंट चाहिए, कोई नई स्टाइल है फाइटिंग की, उससे होगा। डाउन एनिमी को उठा लेंगे ना, इससे ये भी कर लेता हूँ। ओके, हो गया हमारा ये। अब नाउ वी नीड टू गो टू अ शॉप। नाइस, खत्म। Go cool off your head. ओके, हमारे पास 6000 समथिंग हो गया ना। हाँ, तो पहले मेरे को एक चीज ये और करनी है। शॉप कहाँ है भाई? शॉप कहाँ है? यहाँ पे जाना है। ठीक है, जायरो सेंसर ले रहा है क्या? पता नहीं, अपने आप जा ही नहीं रहा था उधर। और उसने जब कहा ना रेडी रहना चाहिए मुझे, तो फिर इसलिए मैंने कहा यार नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। गेट टू द शॉप एंड बाय सम स्टफ। आगे 480 हेल्थ रिकवरी। ओह, ओके ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे वो अपनी हेल्थ रिकवरी वाला इन्वेंट्री। आई थिंक सो इतना होना चाहिए काफी। और इतनी हेल्थ रिकवरी और बची हमारे। एक मार्कर हटा दूं। अब जितनी हेल्थ रिकवरी बची हमारी, उतने में काम हो जाएगा हमारा। यार 600 तो देंगे, क्या फायदा, इनसे लड़के हैं। आई थिंक सो इनफ अपग्रेडेड हैं हम, मेरे हिसाब से। Which one? Can I get your number? Got it. All right. What's your number? We're connected. Which one? What's your number? Got it. जाओ, ओके। All right. कैफे ओनर। ओके, ग्रोथ ओवर टाइम फ्रॉम द गार्डन में ग्रोथ का क्या लॉजिक है? रुक जाओ, मुझे समझ नहीं आया। ओके, वी आर रेडी फॉर इट नाउ। आई एम रेडी। क्योंकि फाइट होने वाली है मेरे हिसाब से। Word is, you're bailing on Kamurocho, Kiryu-chan. Yeah. That's why I came to see you. Eh? How's that mean? I need your help. Someone has to watch Daigo's back. Because I won't be there to do it. What are you getting at here, Kiryu-chan? I think you heard me back there. Let me get this straight. You're asking me to go back to the Tojo clan? That's right. A little late for that, don't you think? Even if I did go back, the Tojo's just not the barrel of monkeys it used to be. Look, Daigo's stepping up to take over. But it won't be easy. He doesn't have a family of his own. So the other patriarchs will think they can push him around. They could make his life a living hell. So what you're saying is, you want me and my boys behind Daigo to make sure none of the other kids bully him too bad? That's right. If we want to unite the Tojo clan, we need you and the Majima family. There's no way this works without you standing up to have Daigo's back. Hard pass. Majima-san. Come on, Kiryu-chan.
Living life caged up like a damn shelter dog ain't my scene and you know it. But that's exactly what I'm doing. Now that I got the Majima family to take care of, I can't go wilding out like I used to. Now you come here asking me to play babysitter for your little protege on top of that? Give me a break. Sorry, Kiryu-chan. Ain't happening. I knew you'd say that. And what of it? Look, Majima-san. You want to let loose, right? Right. But you can't. You're trapped. Right. Well, I'm not asking you to stay cooped up. I'm asking you to break free. Huh? And how the hell am I supposed to do that? When people come after Daigo, I want you to bust their heads, like only you can. I'm asking you to go wild like you've never gone before. I'm listening. The 6th chairman needs an enforcer. Someone to watch out for him and keep everyone in line. Perfect opportunity for someone who's been itching for a fight, don't you think? Kiryu-chan, you asking me to take out the Tojo clan's trash? That's right. Show everyone in Kamurocho what you and the Majima family can really do. I know better than to ask you to babysit. The more ass you kick, the better off the Tojo clan will be. So come do what you do best. You know how I operate, don't you? With me, it's hit hard or hit the bricks. And ain't nobody telling me what to do if they can't bring the heat. I know. So if you want me back with the Tojo clan so bad, you know what you gotta do. Knew it'd go like this. Then, what do you say we get rolling, Kiryu-chan? Feels like ages since me and you threw down, don't it? Careful now. I ain't pulling punches. Good. Then bring it! Kiryu-chan! Kiryu-chan! मेरे को अभी तक स्टांस स्विच का मेरे को समझ ही नहीं आया कि स्टांस स्विच मैं करता तो हूँ लेकिन उसे होता क्या है, सेम ही तो मूव मारता है. Nice dragon finisher. Okay, time to go for the inventory. इंटरेस्टिंग. अभी इसको लेने के लिए
नाइस। भाई मरा कैसे नहीं वो? एक सेकेंड रही, मैं एक और ले लेता हूँ, मैं रिस्क नहीं लूंगा। मरा कैसे नहीं था वो? मारा तो था मैंने, एबिलिटी थी तो मरेगा नहीं गई, ये क्या लॉजिक है? बट फाइट मजेदार थी भाई। ये बॉस फाइट अलग ही लेवल है, मतलब कोई वेपन नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं, बस मुक्काबाजी। Strong as a fucking ox. Well, shit. Guess this is really it, huh? Yeah. Gonna be real lonesome without you, Kiryu-chan. Daigo needs help. I'm counting on you. Yeah. There's just one thing bugging me about it. Yeah, what? If your boy starts going down the wrong track, I ain't so sure I'll be able to push him off it. What do you mean by that? Daigo. I mean the 6th chairman. He can be real trusting, just like you. Hope he doesn't let anyone pull the wool over his eyes. Don't worry. Daigo's young, but he's not a fool. I should get going. The Tojo clan needs you. Good luck. The hell I'd get myself into this time. What can you do? Goro Majima. Running shit big time! What a pain in the ass. Had to go make a promise to Kiryu-chan. What can you damn do? What you can do the next day. All right. Can I leave? Okay. एक और बिजनेस है कोई? Kiryu, it's me. Kashiwagi. That's the plan. Sure, no problem. ओके, उसके फ्रंट में मिलना है हमें। What's this about? ठीक है, we can do that. हम शॉप के आसपास हैं क्या? यहाँ पर रेस्टोरेंट का मार्कर आ रहा है, राइट? तो रेस्टोरेंट में क्या है, क्या मिलता है, इससे क्या होता है? बूस्ट मिलेगा मेरे हिसाब से। हेल्थ इज फुल। ओ ये गेम पहले नहीं बता सकता था। ओके, ये काम आएगा।
Time to dig in. Not bad. That was delicious. Okay, interesting. मेरे को लगा कि हम लोग वो इन्वेंट्री में रख पाएंगे यार, सच में मेरे को वो लगा था. I didn't know that this is gonna go like this. ये एंट्री है कि शॉप की? नहीं. कौन सी एंट्री है? कंफ्यूजिंग है भाई. Can I get your number? Very connected. उधर लाल लाइट है ना, आई थिंक तो वहां. अबे नाइस. Go cool off your head. चलो, हमें बस ये शॉप से अंदर जाना था, बीच में आके कीड़े करने लग गए. वहां से मैं हेल्थ पहले ही रिकवर कर सकता था, मुझे क्या पता था. I'll get 10 of this and I'm gonna get 5 of this. थोड़ा रहेगा हमारे पास. अब 9000 एबिलिटी अपग्रेड करने के लिए. तो हेल्थ काफी कर दी. लेट्स गो फॉर द डैमेज. नाउ इट्स टाइम टू मार्क दिस. यहाँ से अब मार्कर भी दिख जाएगा. अरे भिड़ने चाह रहे क्या? नाइस. चलो, खत्म विदाउट टेकिंग मोर डैमेज. एंड थोड़े पैसे भी आ गए इस बहाने. ओके. चलो 600 इससे भी मिल गए. डैमेज कब ले लिया हल्का सा हम लोगों ने. हाई क्वालिटी एक्सेलरेटिंग क्रॉप्स. भाई आगे पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता चलना है इसका. लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई. Thanks for coming by. Of course. It's good timing. I wanted to drop in and say goodbye anyway. I'm glad I caught you before I left, Kashiwagi-san. So, on the phone you mentioned you needed my help with something. I did. And truth be told, I'd rather not ask a newly minted civilian. But there's no one else I can turn to with this. There's a new gang that goes by the Reapers. I need your help getting them off the streets. The Reapers? Sound friendly. Who are they? Former members of the Tojo clan who didn't take their expulsion well. As you know, the Yakuza may not be above board, but that doesn't mean anything goes. There are rules, and breaking them means consequences, without exception. It's because we're Yakuza that we need a creed. Without one, we have no structure. I agree. The rules are there for a reason. And yet, some join up believing we're a lawless group that allows our men to do as they please. And they're furious when they can't. Of course, we end up kicking out the most egregious offenders, the ones who refuse to be reined in. As a result, some of them have developed a healthy grudge against the Tojo clan, and they're out for revenge. Sounds like bad news. Very much so. They've not only taken to attacking our men, but they've even terrorized civilians using the Tojo clan's name.
One has to assume it's all part of a vendetta against the group they feel so wronged by. That's why we've taken to calling them the Reapers. As you said, a friendly bunch. A pack of disgraced Yakuza with axes to grind. No way the Tojo clan ignores something like that. Not while you're at the helm. I know you. You'd never let them roam free. Of course not. We've been taking down the ones we can find as we find them. Which means there are a couple that we still haven't been able to track down. These holdouts have dug in places we don't have much visibility on, and they make life hell for the people there. And what's considered one of your blind spots? For starters, Okinawa. Ah, now I see. That's not the only place, but rumor has it most of the Reapers fled south. Seems they're not immune to the sun and the sand. The issue is the Tojo clan has little intel on Okinawa. The distance only makes it harder to get involved. I'll admit, I was at a loss. Until I heard about your move, Kiryu-san. You said it before, Kashiwagi-san. I'm a civilian. I know, and I'm sorry. But I have nowhere else to turn here. I'm not asking a favor. You would be well compensated. And these people are dangerous. They're no ordinary thugs. Several used to be hitmen. If we don't act now and do something about them, then it's only a matter of time before the locals are in serious trouble. Put aside the honor of the Tojo clan for a second. The last thing we want is regular people becoming collateral damage. Can't argue with that. All right. I find a Reaper, I take him off the street. That it? That's the job. Here's a list of them. Should contain their usual haunts as well. And don't worry, I'll keep you posted. You'll hear from us if we get any new intel. They're not just in Okinawa either. You'll find some of the Reapers hiding around Kamurocho as well. If you run into one here, you'd be doing us all a favor if you took care of them. Got any more favors up your sleeve, Kashiwagi-san? You do realize I have an orphanage to run, right? I know. It's a lot. But I appreciate your help. Be careful out there, Kiryu. There's more on my plate than I can handle right now, too. We'll both just have to make the best of it. We will. Tell the sixth chairman. Tell Daigo. I said good luck. Kashiwagi-san, take care. You too. Okay. Civilians are. Hefty reward. Saving. Consult the Reaper app. That's interesting. सुनने में अजीब लग रहा है, but ठीक है. I'm gonna get the health. 30k वाली हेल्थ आ पाई है. यार मैं L3 दबा देता हूँ हर बार. मिनट, यहाँ पे रीपर का मार्कर आ रहा है कुछ. ओके. ट्रैकिंग में डाउन 10,000 चाहिए भाई मुझे. Nice. Nice one. Guess then.
एक रीपर डाउन। ऐसे मैप पे मार्कर दिखेगा फिर तो मैं रीपरों को ले सकता हूँ। ओके, एक हो गया रीपर खत्म। 10,000 मिल गए। टाइम टू गेट सब अपग्रेड। ये स्मॉल वाला था ना, ऊपर वाला। हाँ, लेट्स जस्ट गेट दिस एज वेल। 10,000 का, फिर ये भी 30,000, ये भी 30,000 के हो जाएंगे। अभी ये खुलने का है, मेरे को देखते हैं कब खुलता है। We can go to a restaurant now. いらっしゃいませ。 Order. Okay. सबसे फुल हो जाएंगे भाई, इतने ज्यादा हैं। ありがとうございました。 कोई पॉइंट नहीं है। मेरे को लगा कि मैं बात करूंगा वैसे ही फुल हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं कर रहा था, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे रीपर भी मिल जाएगा रास्ते में। That's gonna be nice. एक सेकंड, फोन नंबर ले लेते हैं। What's your number? मैं तो कलेक्ट कर रहा हूँ जितने का मिल रहा है। तो ये कोई रिवॉर्ड देगी क्या? ओके, सो प्लीज डू। ओके, मोबाइल स्टिकर मिला। नाइस, अब जस्ट गो देयर, लेट्स जस्ट गो देयर। अरे मुझे उससे लड़ना था, तुम कहाँ से बीच में आ रहे हो? ये लोग पता नहीं कहां से बीच में आ रहे हैं। मुझे इससे रीपर से लड़ना है भाई। वांटेड लिस्ट 10,000 का ये भी है। सब लोग भाग रहे हैं पीछे। लेट्स गेट दिस रीपर आउट एज वेल एंड देन वी कैन गो फॉर द मेन मिशन। इससे हमारे पास करीबन 20,000 के करीब हो जाएंगे। 10,000 ये और अभी 7-8 हज़ार हमारे पास अभी पड़े हैं, तो हो जाएंगे। ना इसे मीटर फुल पड़ा था, मेरे को लेना था। Let's see. हो गया खत्म। रेस्टोरेंट के अंदर जाके थोड़ी तबाही करी, बट सॉरी। ओके, 10,000 इसका भी मिल जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी श्रिंक माय फेस। भाई तो खुद पतला भी तो हो सकता है, फिर उससे भी तो तेरा फेस श्रिंक हो जाएगा। जैसे लाइक आई थिंक मेरा था जैसे पुराना वाला, वैसा तो नहीं आएगा लाइक एग्जैक्ट, क्योंकि वो बचपन वाला फेस था। बट हाँ, ये जरूर है अगर मैं लाइक वर्कआउट वगैरह करूँ तो आई थिंक सो आई विल बी एबल टू डू लाइक माई फेस विल बी लिटिल बिट स्लिमर विच इज गोना बी गुड इनफ आई थिंक इन मोस्ट केसेस। क्या हुआ? इसको क्या चाहिए? पार्टिंग गिफ्ट।
Auto privacy. कि लेट्स सी अगर ये वो है जो मैं सोच रहा हूँ, वो जो 200 पॉइंट वगैरह वाला है, तो फिर हम लोग अपग्रेड और कर पाएंगे। नए मूव खुल जाएंगे तो अच्छा ही है ना फिर। देखते हैं। Right. A box anyway. Yeah. I feel bad. Make another. Oh, nice thought. But I appreciate it. Fun to play with. Hope to see you as soon as possible. Let's talk to her. Yes, let's head out. बाद में आ जाएंगे इधर वापस, कभी ना कभी आ करने होंगे वो रीपर वाला हमें तो। Uncle Kaz, look! Majima-san. That sandy beach sounds better every minute. New beginnings. We got a first trophy of the game. ये सारे सेव कहाँ से, इतने ऑटो सेव? Interesting. Chapter 2, the Ryodyu encounter. I think तो चैप्टर 2 ही था जो हमें डेमो में खेलने को मिला था। I think so. ऐसे किसी बंदे का नाम था यार। बीच से आए थे, वो घर लेना चाह रहे थे, फिर हम मिले थे टाइप। ये क्या पत्ता गोभी छील रहा है क्या ये? Uncle Kaz, still not ready? I'm trying to focus here. Don't interrupt me. How many times do I have to tell you? Oh, Haruka! You can't bother him while he's cooking. You know better, Taichi. Come on, everybody's playing outside till dinner's ready, remember? I'm starving. Oh man, curry! Spoons down. You know we don't eat until everyone's at the table. Okay. Oh, curry! I'm starving. I want to eat. I think that's everyone. Wait, hang on. Where's Izumi? Huh? Izumi-chan's not back yet? I don't know. Shiro, weren't you two supposed to walk home from school together? We did. She was with me the whole way. Hmm?
So you don't know where she is right now, Shiro? Nope. Where could she be? She's probably fine. Let's just see without her. Yeah, come on. It'll be okay. I know it. Uncle Kaz, what do we do? We go find her, you and me. The rest of you, go ahead and eat without us. Finally! Let's eat! ओके इज़ुमी ढूंढनी है को ढूंढना है हमें बट आई गेस मैं यहाँ पे वीडियो को भी एंड कर दूंगा देखता हूँ वो कुछ मिला कि हमें नहीं वो 0 पॉइंट पे है तो जो भी है मैं वीडियो को एंड करता हूँ आई होप यू गाइस एंजॉयड इट लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अगली बार एंड पीस 499 आउट